Hello students, welcome back to the class, and we were discussing the decline of the Mughal Empire. Here we are discussing the later Mughals, and these later Mughals were very weak and inefficient, because of which the Mughal dynasty declined. The Mughal dynasty came to an end. The Mughal emperors are categorized into two categories, two parts: the early Mughals and the later Mughals. And these later Mughals were very weak. The early Mughals were very powerful, they were capable, they were efficient, because of which they expanded their empire. But these later Mughals were very weak and inefficient. Because of this reason, the Mughal dynasty came to an end. And after the death of Aurangzeb, when he died in the year 1707. He died in the year 1707, and after his death, the Mughal dynasty started declining because of weak successor of the Aurangzeb. And under the category of later Mughals, we have discussed, we have finished Bahadur Shah I, and Bahadur Shah I became ruler after defeating his two brothers, and his real name was Muazzam. And after ascending the throne, he took the title Bahadur Shah I. Okay, after defeating his two brothers, and he was also he is known as Shah-e-Bekhabar, which means headless king. He is known as Shah-e-Bekhabar, and he adopted the policy of compromise. He made compromise with Marathas, Sikhs, etc. In this way he ruled, and he died in the year 1712. And after his death, civil war broke out into his empire. Okay, and after his death, his son became the next ruler, whose name was Jahandar Shah. Okay, his son was Jahandar Shah, and Jahandar Shah was very weak. He was incapable. He ascended the throne not by his own strength, but due to the help of his general, whose name was Zulfikar Khan. Okay, he was incapable ruler. He was the son of Bahadur Shah I, and he ascended throne with the help of Zulfikar Khan. And his rule ended within 1 year, that is in the year 1713. As I have mentioned that Bahadur Shah I died in which year? He died in 1712, and after his death, Jahandar Shah became the ruler, and he was the son of Bahadur Shah I, and within 1 year his rule ended. That was, the year was 1713, and he was defeated by his own nephew. Jahandar Shah was defeated by his own nephew, whose name was Farooq Siyar. Who was the nephew of Jahandar Shah? Farooq Siyar. And after defeating Jahandar Shah, Farooq Siyar ascended the throne. He became the ruler. He succeeded Jahandar Shah, okay, and ascended the throne. And he was also incapable ruler. He was also not powerful ruler. He became ruler. He ascended the throne with the help of Said brothers. Said brothers helped him. Then only he became, afterwards he became the ruler of okay. And these Said brothers were Abdullah Khan and Hussein Khan. The name of these Said brothers were Abdullah Khan and Hussein Khan, and they were appointed as Wazir and Mir Bakshi. ठीक है, they were appointed as Wazir and Mir Bakshi. वजीर क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर, एक तरीके से मान सकते हो, प्राइम मिनिस्टर. और जो मीर बख्शी उस टाइम पीरियड में पे मास्टर होते थे, पे मास्टर ऑफ द आर्मी. ओके, तो Farooq Siyar ascended the
the throne with the help of Said brothers, and these Said brothers were Abdullah Khan and Hussein Khan, and they were appointed as Wazir and Mir Bakshi. Okay, and these Said brothers, the Said brothers are known as kingmakers in history. They are known as kingmakers in history. We'll discuss this thing later on. And these Said brothers took control over the whole empire. They took control of the state affairs. As he was very weak, the ruler was very weak, that is why they took the advantage and they started controlling the state affairs. They started controlling the whole state affairs. As the ruler, as Farooq Siyar was incapable, he was weak, not powerful. And these Said brothers, the Said brothers, that is Abdullah Khan and Hussein Khan, adopted the policy of religious टॉलरेंस. रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब क्या है? इन्होंने सभी धर्मों को क्या दी? समानता दी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, औरंगजेब वॉज रिलीजियस इंटॉलरेंट. जो औरंगजेब था वो रिलीजियस इंटॉलरेंट था. उसने नॉन मुस्लिम पीपल पे जजिया, इट वॉज अ काइंड ऑफ टैक्स, वो इम्पोज कर दिया था. बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन कर दिया था औरंगजेब ने, क्योंकि वो हिंदू पीपल के लिए काफ़ी क्रूअल था. ही वॉज रिलीजियस बाय गॉड. और उसने क्या कर दिया था? बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन करा दिया था. और हिंदू पीपल से, जो अदर रिलीजन को बिलोंग करने वाले लोग थे एक्सेप्ट मुस्लिम, उनसे टैक्स लिया जाता था. तो लेकिन जो ये सईद ब्रदर्स थे वो ऐसे नहीं थे, वो रिलीजियस टॉलरेंट थे. औरंगजेब इनटॉलरेंट था और ये सईद ब्रदर्स टॉलरेंट थे, जिसकी वजह से इन्होंने क्या करा? अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया था. दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड दे अबॉलिश जजिया एंड पिलग्रिम टैक्स. ठीक है, इसने दो तरीके के जो टैक्स थे उनको क्या कर दिया था? ख़त्म कर दिया था. जो सईद ब्रदर्स थे इन्होंने ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करी ताकि ये क्या कर सके? अपने आप को स्टेबल कर सके, इस्टेब्लिश कर सके और लोगों का इनको सपोर्ट मिल सके. सो दे अबॉलिश्ड जजिया. इट वाज अ काइंड ऑफ टैक्स. जजिया वाज अ काइंड ऑफ टैक्स एंड दे आल्सो अबॉलिश्ड पिलग्रिम tax. So these Said brothers adopted the policy of religious tolerance, and apart from this, besides this, they gave high position to Rajput in the administration में राजपूतों को इन्होंने क्या दिया? हाई पोस्ट प्रोवाइड कराई ताकि सबके साथ इनके रिलेशनशिप क्या हो सके? अच्छे हो सके और उनको किसी भी तरीके की डिफिकल्टी ना हो रूल करने में. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज दैट they granted, these Said brothers, they granted Maratha Swaraj and right to collect चौथ एंड सरदेश मुखी. ठीक है, इन्होंने मराठा को स्वराज्य भी वापस कर दिया, स्वराज्य जो कि शिवाजी का था. ठीक है, तो मराठास को ये भी वापस कर दिया, स्वराज जो उनका खुद का राज की टेरिटरी थी वो वापस कर दिया. और इसके अलावा उनको राइट भी दे दिया कि वो क्या कर सकते हैं? अपने स्वराज्य से क्या कलेक्ट कर सकते हैं? दे गिव राइट टू कलेक्ट वन चौथ एंड सरदेश मुखी. ठीक है, इन योर बुक दीज टर्म्स आर मेंशन, चौथ एंड सरदेश मुखी. मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. ठीक है, चौथ क्या था? चौथ वॉज 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस एंड सरदेश मुखी वॉज 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस. ठीक है, मतलब अगर कोई भी जो किसान होता था वो जब प्रोड्यूस करता था, चीज़ें उगाता था, गेहूं अनाज वगैरह जो भी उगाता था, उसका 1/4 पार्ट जो होता था उसको चौथ बोला जाता था. और टोटल प्रोड्यूस का 1/10 पार्ट को सरदेश मुखी बोला जाता था. ठीक है, तो सरदेश मुखी क्या था? सरदेश मुखी वॉज 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस एंड चौथ वॉज 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस. ठीक है, तो इसने मतलब क्या करा? लोगों के साथ, सईद ब्रदर्स ने लोगों को एक तरीके से लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करा. उनको क्या दिया? फ्रीडम एक तरीके से देने शुरू कर दी. उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन करने शुरू कर दिए. जैसे उसने टैक्स को अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया था. पिलग्रिम
पिलग्रिम टैक्स क्या होता है, जो यात्रा पे, जो होली तीर्थ यात्रा होती है उस पे जो कर लगाया जाता है, टैक्स लिया जाता है, वो होता है पिलग्रिम टैक्स। और जजिया टैक्स को दोनों को अबॉलिश करा। हाई पोजीशन दी राजपूत को एडमिनिस्ट्रेशन में, और साथ ही साथ मराठास को स्वराज्य दिया, और साथ ही साथ उन्हें ये हक दिया कि वो क्या कर सकते हैं, क्या कलेक्ट कर सकते हैं, 1/4 एंड 1/10 जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था। 1/4 क्या था, चौथ, एंड 1/10 क्या था, सरदेश मुखी। और जो फारूक सियार था, ठीक है, जो फारूक सियार था, जो थर्ड लेटर मुगल की कैटेगरी में आता है, फारूक सियार ने क्या ग्रांट किया था, ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को। ही द फारूक सियार ग्रांटेड ट्रेडिंग प्रिविलेजेस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और उसके अलावा सईद ब्रदर्स ने क्या करा, दी सईद ब्रदर्स स्ट्रैंगल्ड Farooq Siyar, and after that he died, and they raised 3 rulers because of which they are known as king makers। इन्होंने सईद ब्रदर्स ने क्या करा, फारूक सियार का गला दबा के मार दिया, उसका गला घोट दिया। स्ट्रैंगल मीन्स उसका गला दबा के उसको मार दिया। और उसके बाद 3 नए रूलर्स बनाए, इनके वजह से 3 नए रूलर्स बने। फारूक सियार भी इन्हीं की हेल्प से बना था रूलर। और उसके बाद इन्होंने क्विक, बहुत ही कम समय में 3 नए राजा बनाए, जिनका नाम क्या था, रफी उद दराजत, रफी उद दौला एंड मोहम्मद शाह। These were the 3 rulers who were raised by these Said brothers, and because of that these Said brothers are known as king makers in history। इन्होंने राजा बनाने का काम करा, इसी वजह से हिस्ट्री में इनको किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। सईद ब्रदर्स आर ऑल्सो नोन एज किंग मेकर्स। ओके, तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।